वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। हम लोगों ने कैट 2020 के स्लॉट 3 के क्यूए सॉल्यूशंस के 2 वीडियो देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से था और एक और क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड था। सो दीज आर द टॉपिक्स। सो मोस्टली arithmetic and geometry we have covered. Now, this is the third and final video of slot 3 solutions of quantitative ability. इसमें हम लोगों ने रिमेनिंग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को उठाया है, जिसमें कि मोस्टली अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं। अलजेब्रा में भी लॉग, इंडिसेस, सर्ड्स से भी क्वेश्चंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस हैं, फंक्शन से क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, सो यही आपके अलजेब्रा से टोटल अगर हम देखें, इन सारे चैप्टर्स को मिला के देखें तो अराउंड अबाउट 6 क्वेश्चंस आए थे। So let us get into solving these, discussing these questions which had appeared in slot 3 of CAT 2020. All right, so let us start. The first question, as you can see, this is a indices question. क्या कहता है? If A, B, C are non-zero, okay, A, B, C are non-zero and ये एक रिलेशन दे रखा है, 14 to the power A is equal to 36 to the power B is equal to 84 to the power C. Then एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, 6b इंटू 1/c माइनस 1/a। ओके, ऑल राइट। अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। नाउ सी, दिस इज काइंड ऑफ अ मम्बो जम्बो। आई विल नॉट से दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. It depends on how much you have practiced. If you have practiced these types of questions before, this becomes very easy. It is the routine question. But if you have not seen these types of questions before, if you have not practiced these, if these are alien to you, then it might be intimidating in exam situation. So I will not say this is very easy. For some group of student, a group of student who have practiced these types of questions, it will be very easy. For those students who have not at all practiced these types of questions, for them it will be on a difficult side. Okay, but let us see how we can go about solving it. Now see, here one thing is that एक 14 है दिया हुआ और एक 84 है दिया हुआ, और हमें जो एक्सप्रेशन है वो किस में चाहिए, 1/c और 1/a। ना 1/c 1/a आएगा कैसे? सी, 14 टू द पावर a, और रैदर हम कहें ये 1/c इंटू बी है, तो एक्चुअली ये क्या है, b/c, और b इंटू 1/a है, तो कितना है, b/a। नाउ b/c और b/a आएगा कहाँ से? सो b और c और b और a, तो b और c कैसे आएगा, या b और a कैसे आएगा? यहाँ पावर b है, यहाँ पावर a है, तो इसको ले लेते हैं। 14 टू द पावर a इज इक्वल टू 36 टू द पावर b। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 14 इज इक्वल टू 36 टू द पावर b/a। कैन से दैट? नाउ सिमिलरली b/a तो आ गया, b/a आ गया, अब क्या चाहिए, b/c। b/c कैसे आएगा, b और c, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सो वी नो 80, इट इज गिवन दैट 84 टू द पावर c इज इक्वल टू 36 टू द पावर b। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 84 इज इक्वल टू 36 टू द पावर b/c। ऐसा कह सकते हैं। वंडरफुल, b/a भी आ गया, b/c भी आ गया। Now it is also known, it is also very obvious that 14 और 84 एक दूसरे का, 14 into 6 is 84. So 14 is, sorry, 84 is 6 times 84. So we can say 36 to the power b/c is 6 times 36 to the power b/a, because 36 to the power b/c है क्या, 84. So this is 84 and 36 to the power b/a क्या है, यह है 14. So this is 14 and 14 into 6 कितना होता है, 84 होता है। So ये रिलेशन बन गया। अब तो काम आसान है। So 36 to the power b/c is equal to this 6. This can be written as 36 to the power half, 36 का पावर हाफ। So 36 का पावर हाफ into 36 का पावर b/a, तो ये हो जाएगा 36 का पावर, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी हाफ प्लस b/a। ठीक है, दोनों नंबर का बेस सेम है, दोनों नंबर भी इक्वल है, इसका मतलब दोनों के पावर्स या इंडिसेस भी इक्वल होंगे। सो यू कैन से b/c इज इक्वल टू हाफ प्लस b/a। टेक इट दिस साइड, सो b इंटू 1/c माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/2। हमें क्या चाहिए, 6b, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6b कितना हो जाएगा, इंटू 6 विच इज 3। सो द आंसर इज 3। ओके, सो माई आंसर इज 3 here. Very
I would say a tricky question for those who have not solved it, but this is kind of a mumbo jumbo. If you know it, you can solve it within few seconds. If you don't know it, it might become time consuming. Okay, but I've given you the thought process, how to go about solving it. Now look at this B by C. Key is to look at identify this expression B by C and B by A, and now figure out how B by C will come, how B by A will come. So B by A or B by C will come with B and C. B by A will come with B and A. So we have to equate these two. From here we get 14 is 36 to the power B by A, 84 is 36 to the power B by C. तो B by A भी आ गया, B by C भी आ गया. यहीं से हमें clue मिल रहा था question का. But as no said earlier, this was not an easy question in exam situation if you have not seen this question before. But if you have seen these types of question, practice these types of question before, it becomes very easy. So practice pays big time in exam. And there's absolutely no doubt about it. Let's move on. Okay, this is again a function question, a very regular or a routine type of function question. It's based on user-defined function. Whenever you have f of x plus y is equal to fx into fy, or f of x minus y is equal to something, f of x divide f of x by y is equal to f of x minus fyy, something like this. This is called user-defined function. So this is a very regular routine type of question based on user-defined function. Okay, so these are all commonsensical questions. See, f of 5 is given and a relation is given. Now based on these two, you have to find f of 10 and f of minus 10. f of 10 अगर निकाल ले, f of minus 10 निकाल ले, तो हमारा आंसर आ जाएगा. f of 10 कैसे आएगा? Very simple. f of 10 can be written as f of 5 plus 5. Now, using this relation, 5 plus 5. So x is 5, y is also 5. So it will be f of 5 into f of 5. So I'll say this is f of 5 into f of 5. And f of 5 is given as 4. So this is 4 into 4, 16. So the first part is obtained. f of 10 तो आ गया आसानी से. कितना है? 16. हमें जो सोचना है वो सोचना है f of minus 10 निकालने के लिए. अगर f of minus 10 आ गया तो आपका काम हो गया. Now, how do we go about it? See, we can say that f of 5 can also be written as f of 5 plus 0. Now, f of 5 plus 0 is f of 5 into f of 0. Because ये x है, ये y है. तो f of x plus y, f of x into f of y. Now, we know f of 5 is 4. So, from here we can say 4 is equal to 4 into f of 0. Because f of 5 ये भी है 4, f of 5 ये भी है 4. तो यहाँ से f of 0 आ गया. कितना? 1. f of 0 भी निकल गया, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं. हमें क्या चाहिए? f of minus 10. Think about it. We can say that f of 10 minus 5. f of 5 is f of 10 minus 5. ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 10 minus 5 क्या होगा? 5 होगा. और f of 10 minus 5 में x है 10 और y कितना है? minus 5. So you can say this is f of 10 into f of minus 5. Can we say it like this? तो बहुत आसानी से कह सकते हैं. और f of 5 तो हमें पता है. f of 5 कितना है? f of 5 है 4. So you can say 4 is equal to f of 10 भी पता है. f of 10 कितना आया था? अभी देखा था 16 into f of minus 5. So यहाँ से f of minus 5 आ गया. f of minus 5 कितना हो गया? 1/4. वंडरफुल. f of minus 5 आ गया तो काम हो गया, क्योंकि f of minus 10 को हम लिख सकते हैं f of minus 5 minus 5. और ये x भी है minus 5, y भी है minus 5. So you can say this is f of minus 5 into f of minus 5, that is f of minus 5 का स्क्वायर, that is 1/4 का स्क्वायर. तो कितना हो गया? 1/16. So f of minus 10 is 1/16, f of 10 is 16. तो जो हमारा आंसर आएगा f of 10 minus f of minus 10, this will be 16 minus 1/16. So 16 minus 0.06725. यही होगा ना? So this is 15.9375. So 15.9375, that is option 2. 2 is the answer. So this was a very regular question, a very doable question, I would say, in exam. If you have practiced questions like these before, even if you have practiced some bit of user defined function, this question will be categorized as a routine question for you. Okay, let's move on. Next one. Okay. क्या कहता है क्वेश्चन में? x1 is equal to minus 1,
सो x1 की वैल्यू दे रखी है -1 और एक रिलेशन दिया है xm इज इक्वल टू xm प्लस वन प्लस m प्लस वन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर m। तो m पॉजिटिव इंटीजर है, तो पूछा है x100 की वैल्यू क्या होगी। We can sense very clearly here that this is a series based question. So we have to find x2, x3, x4 and see how the series is progressing. Based on that we can identify the value of x100. Okay. So अब m का वैल्यू आप यहाँ पे 1 ले लीजिए। m का वैल्यू कितना ले लें, इसमें 1 ले लें, तो ये कितना आएगा x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 2। इसका मतलब है कि x2 कितना हो जाएगा x1 माइनस 2। So we can say x2 is x1 which is -1 -2। ठीक है, -1 -2। Now यहाँ पे हमने m की वैल्यू क्या ली थी, 1 ली थी। टेक m as 2। इसमें m का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगा x2 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 x3 प्लस 3। तो यहाँ से x3 आ गया x2 माइनस 3। So you can say x3 is x2 minus 3. So this minus 3. So -1 -2 -3. Now there is a pattern. If 1 है तो -1, 2 है तो -1 -2, 3 है तो -1 -2 -3. So similarly we can say x100 is -1 -2 -3 up to -100. So minus of 1 plus 2 plus 3 up to 100. So this is -100 into 101 by 2. Sum of n consecutive natural number is n into n plus 1 by 2. So ये कितना आ गया -5050। very simple question from sequential series. Okay, all right. Next one कहता है m and n be positive integers. Always pay attention to the details. They are positive integers. And if x square plus mx plus 2n is equal to 0, one equation, and x square plus 2nx plus m is equal to 0 have real roots। इसके रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स हैं रियल। नाउ रियल रूट रहेगा, इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों का डी निकाल लेते हैं। इसका डी आएगा कितना, एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो एम स्क्वायर माइनस 8n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8n। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 4n स्क्वायर माइनस 4m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m। So this relation and this relation, both these relations have to be valid, तभी जाके हमारा कंडीशन क्वेश्चन का मीट करेगा। तो पूछा है देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m प्लस n। m प्लस n का हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है। ओके, अब देखिए m और n है क्या, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। पे अटेंशन टू द फर्स्ट रिलेशन दैट वी हैव गॉट इन दिस वन, 8 इंटू सम इंटीजर। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ये कभी भी 8 से कम नहीं होगी। 8 इंटू मिनिमम क्या होगा, 8 इंटू 1 8 तो होगा ही होगा। अगर ये 8 है, मिनिमम वैल्यू 8 है, तो एम स्क्वायर 8 या उससे ज्यादा होना चाहिए। एम भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 तो नहीं ले सकते बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। 2 भी नहीं ले सकते बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। तो मिनिमम एम का वैल्यू कितना लेना होगा, 3 लेना होगा। टेक एम एस 3 because see why are we taking minimum, because we have to find out smallest possible value of m plus n. So m plus n will be smallest only when m and n both are as small as possible. So minimum possible value of m is 3, we know that. Now 3 square 9, तो ये तो 9 हो जाएगा। अब इसको 9 से कम या उसके बराबर रखना है तो हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू कितना रखना होगा, 1 रखना होगा कि 8 इंटू 1 8 आएगा तो ठीक है, लेकिन 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16। सो m आया 3, n आया 1। ठीक है, नाउ टेस्ट इट कि यहाँ पे इस वाले में भी तो वैलिड होना चाहिए ना। लेट अस टेस्ट इट हियर आल्सो। नाउ n स्क्वायर, n का वैल्यू 1 लिए है तो ये कितना आएगा 1, और m का वैल्यू 3 लिया है तो ये 3 आ गया। बट m ये तो बड़ा हो गया, जबकि रिलेशन कहता है n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मतलब m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ वैलिड वन। इट इज नॉट satisfying, it is satisfying the first condition but not satisfying the second condition। मूव ऑन, नेक्स्ट बड़ा लेते हैं। स्मॉलेस्ट चाहिए तो 3 में तो नहीं हुआ, तो 4 में लेके देखते हैं काम बनता है कि नहीं। 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर 16, और ये 16 होगा तो n का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है।
16 बड़ा होना चाहिए 8 इंटू एन से। तो एन का वैल्यू 1 ले तो 8 इंटू वन 8, तो ये बड़ा है, चलेगा। 8 इंटू टू 16, 16 भी होगा तो इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल तो हो ही सकता है ना, यहाँ इक्वलिटी तो लगा ही हुआ है। तो 1 2, लेकिन 3 ले लेंगे तो 8 3 जा 24, 16 से ज्यादा हो जाएगा, सो वी कैन नॉट टेक 3, so there are two possibilities 1 and 2। और सी दोनों में से कौन सा होगा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एम आना चाहिए, तो अगर हमने 1 लिया तो ये 1 आएगा, एम की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ तो यही ज्यादा हो रहा है, सो 1 इज रूल्ड आउट, 1 तो नहीं होगा। 2 चेक कर लेते हैं, एन का वैल्यू 2 लेंगे तो ये 4 आएगा और एम भी कितना है 4 है, तो ये इक्वल आ रहा है, इक्वल तो यहाँ लगा ही हुआ है, इक्वल तो हो ही सकता है। सो इसका मतलब है कि m इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 2 दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो हमारा जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आएगा m प्लस n का, दैट विल बी 4 प्लस 2 6। 6 is the answer. Fourth option is the correct answer. So this was again based on quadratic equation, simple रियल रूट पे बेस्ड क्वेश्चन था। डी दोनों जो तरफ क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसी कंडीशन पे था। और मिनिमम तभी आया जब दोनों कंडीशन मीट हो रहा है, और दोनों कंडीशन मीट हो रहा है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपको उसके लिए निकालना था। ओके, और दोनों में इक्वलिटी पे मीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी ये एम स्क्वायर और 8n बराबर हो रहा है 16 16, और यहाँ भी एन स्क्वायर और m बराबर हो रहा है 16 सॉरी 4 और 4। Okay. All right. Next one. This is based on log. A very routine question again. Not very difficult question. 2 into 4 into 8 into 16. So ऊपर में तो कुछ करना ही नहीं है, नीचे वाली वैल्यूज निकालनी है। Now log 4 to the base 2 is 2, because ये 2 स्क्वायर है, तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, so this is 2 स्क्वायर। Now log 8 to the base 4, 8 is 2 cube, 4 is 2 स्क्वायर, तो 2 क्यूब 2 स्क्वायर, तो 3 बाई 2 बाहर आ जाएगा, log 2 to the base 2 1 हो जाएगा, सो 3 बाई 2 का क्यूब, सो दिस इज 3 क्यूब, एंड ऊपर चला जाएगा 2 क्यूब। आई होप इट इज क्लियर। सी log 8 to the base 4, you can say this is log of 2 cube to the base 2 square, तो ये जो पावर है ये बाहर ले लेते हैं, 3 बाई 2 into log of 2 to the base 2 which is 1, so ये कितना आ गया 3 by 2, so log 8 to the base 4 is 3 by 2, तो उसका क्यूब है तो 3 क्यूब by 2 क्यूब, so 3 क्यूब and 2 क्यूब। Similarly this one 2 power 4 and 2 power 3, so 4 by 3 का power 4, so this is 4 का power 4 into 3 का power 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सो 3 का पावर 4, 3 का क्यूब से 3 टाइम चला जाएगा, ये कितना है 2 पावर 8, दिस इज 2 पावर 8 एंड 2 पावर 2, सो 10 टाइम्स 2, 10 टाइम्स 2 यहाँ से निकाल लेते हैं, कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार और तीन बार, 6 बार, 6 बार और 4 बार, 10 बार, तो ये सारे निकल गए किससे, इससे और इससे, तो क्या बच रहा है 8 इंटू 3, कितना हो गया 24, सो माय आंसर इज 24। वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन लॉग। Log we have seen for last 5 years, I would say, is coming on a regular basis, and every year in every slot you are getting at least two questions, can go up to three also, so 2 3 questions in every slot is from log. So log has become very important topic, and a topic from where there is a high possibility of questions coming from this chapter. So this chapter has become really important. Don't miss out this chapter if you are preparing for next year's cat. Remember, log is a very simple topic, very small topic, few ideas are there which are not tested as far as cat is concerned. So focus on this chapter, you will have at least 2 3 questions in your kitty. Next one, again a log based question. So as you can see, slot 3 of cat 2020 evening slot had also 2 questions from log, and the same was the trend in slot 1 and slot 2 also. So cat 20 was also no exception. Now see, this is slightly, it demands some thinking through. It is not that obvious as the previous question on log. Let us first look at it. See, there are few expressions given to you, and then you have to find log a to the base 3. So first is log 30 to the base a. This is given as a. Log 5 by 3 to the base a. This is given as minus b. And log a to the base 2 is given as 1 by 3. तीन आपको log की वैल्यू दे रखी है और आपको निकालना है log a to the base 3 की वैल्यू निकालना है। ओके, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं बिकॉज ऑप्शन दिया हुआ है, वरना आप नहीं
नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, इसी जगह हर जगह ए प्लस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी। तो आप ए प्लस बी पहले निकाल सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं, इज नथिंग रॉन्ग इन गोइंग बाई ऑप्शंस। तो आप वैसे भी कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ए है और ये माइनस बी है, तो अगर हम इसमें से इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सी log 5/3 टू द बेस ए इज इक्वल टू माइनस बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यू कैन से log 30 टू द बेस ए माइनस log ऑफ 5/3 टू द बेस ए इज इक्वल टू कितना, ए प्लस बी, ऐसा कह सकते हैं। और log ए माइनस log बी क्या होता है, log ऑफ ए बाई बी, सो यू कैन से log ऑफ 30/5/3 to the base a is equal to a plus b. So you can say log of 18 to the base a is a plus b. ठीक है, इतना तो क्लियर है। नाउ log 18 को आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, क्यों करना चाहेंगे, बिकॉज आपके पास log 2 भी मालूम है, सो यू कैन राइट दिस 18 एज 2 into 3 square, राइट लाइक दिस, इज इक्वल टू a plus b. So log of a into b क्या होता है, log a plus log b. So you can say this is log of 2 to the base a plus 2 log 3 to the base a is equal to a plus b. Now log of 2 to the base a is 3 because log of a to the base 2 कितना है, 1/3. So from here we can say log of 2 to the base a will be 3. So this is 3. तो ये 3 उधर चला जाएगा तो बचेगा कितना, 2 log 3 to the base a is a plus b minus 3. So log of 3 to the base a is a plus b minus 3 divided by 2. और यही तो हमें निकालना था, find log of a to the base 3. So 2 upon okay, so we had to find the reverse of this. See, this is log of a to the base 3, हम लोग क्या निकाले, log of 3 to the base a, तो इसका जो रिवर्स हो जाएगा log of a to the base 3 will be 2 upon a plus b minus 3, और यही तो निकालना था, log of a to the base 3 which is 2 upon a plus b minus 3. So my answer is first option. Okay, so these were some algebra questions as far as slot 3 of this year's CAT, that is CAT 2020 is concerned. So in these 3 videos of quant solutions, we have covered all the questions that have appeared in slot 3 as far as quant is considered. As you can see for yourself, if you have watched all these 3 videos, CAT quant section is not that demanding section. All that is required is a good grip on basics, a solid grounding on basics, and practice. One more advice I would, there are a couple of two advices that I would like to give you here after discussing all the question is that CAT for last so many years, I would say 3, 4, 5 years, is giving us a very clear signal as far as preparation for quant is concerned. First is, don't go to unnecessarily high level difficulty questions. We have seen in many coaching institute materials as well as mocks, there is obscenely high difficulty level questions which are given. Those types of questions are not asked in CAT. Even if they are asked, they are 1 or 2 exceptions. They are not a routine thing, they are an exception thing. So you cannot prepare yourself for the exceptional things. You have to first prepare yourself for the meaty part of the CAT exam, which is most of the questions are at a certain level of difficulty. So you have to practice most of the questions of that difficulty level rather than looking for some exceptional 1 or 2 odd questions that you might find in CAT very difficult. Okay, so don't prepare for those types of questions because those questions will be very few questions, maybe 1 or 2 questions, not more than that. So it is okay to prepare for those questions, but only when you have practiced for the actual CAT level questions really well. Then you can go for those also, so that you get 100% in quant and all, if you have those types of aspirations. Okay, all right. Now, first is this, that you have to practice at a certain level, don't go beyond that. Always remember, practice may be a couple of notches, 1 notch above what is normally expected in exam, not beyond that. There are some questions that you should practice because those will help you clear your concepts. So you're not, so whenever you're crossing the boundary line, you should be aware that why you're crossing to
to bring more clarity to yourself as far as the concepts are considered, not to just get some kick out of it. That is not the idea. The second point that I would emphasize here is that don't leave any topic. As you can see, topics as insignificant as maybe coordinate geometry. This year, coordinate geometry had two questions, couple of questions from coordinate geometry. People leave graph, but graph is a very simple topic. If you have understood how to draw graphs for different types of standard functions like trigonometric functions, algebraic functions, mod function, exponential function, logarithmic function, these questions can be very easily answered. So don't leave out seemingly insignificant topic, because nothing is insignificant. If you have practice, if you have done the covered the basics for of all the chapters, have done some bit of practice, you will be in a position to attempt as many questions as possible. But if you have restricted yourself to few topics, then it might hurt you. You cannot go beyond a certain percentile. So for clearing sectional cutoff, I would say one topic arithmetic itself is sufficient. But if you want to get really high score in quantitative ability, I would say no, spread your no area. I would say don't put all the eggs in one basket. Spread it so that you are able to answer as many questions as possible. So these are my advice for those students who are preparing for next year's CAT exam. Okay, so this is all from my side as far as this video is considered. अगले वीडियो में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आपके सामने आएंगे. ठीक है, see you there. Bye bye.